Hello students, welcome to StudyGest, the world of educational solutions. StudyGest is a unique platform where you are provided with each and every kind of educational solutions. So today we will be focusing about the academic point of view, the rational and irrational numbers, that is in mathematics chapter. So let us begin our chapter with rational and irrational numbers. So let us see what we will be discussing today. Like itinerary for our classes today is, first of all, we'll see about the introduction. Today we'll be knowing that what is rational numbers, what are number system. Basically जानेंगे कि क्या है इसमें, क्या रहता है, numbers क्या है. बहुत easy है, आप लोग को पता ही होगा, पहले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे. Next we'll be knowing what is rational number. I am sure, or if you don't know, you'll be knowing that it is represented by Q. It's given here, right? So after that we'll be looking about the properties of rational number. See, if you know something, it is very important to know its properties as well, right? So we'll be, after knowing what is rational number, we'll be coming on to properties, and after that we'll tell you about the decimal representation of rational numbers. So let us begin our classes today. Before beginning our session, let me just remind you of our social media platform that we are having. You can subscribe to our YouTube channel. You can see here it is StudyGest Academics. Then you can like our Facebook page, that is studygest.in. You can join our Telegram channel, that is the link provided here, StudyGest School 7 to 10. You can see it is given here. This is a screenshot of our Telegram channel. If you join this Telegram channel, you will be provided with each and every kind of educational notes. You will be notified about the live classes. To do, make sure to join our Telegram channel and follow us on Instagram by StudyGest, typing StudyGest, and join our community on WhatsApp by given number. And for more information, don't forget to log in to www.studygest.in. So you can see this is our YouTube channel, looks like this, StudyGest Academy. You can see and subscribe our channel, and this is our Facebook page. You can see and visit our page. So let us start our class today. So let us at first, before starting, let us know what is a number line. I know everyone knows about the number, what is a number and everything. Let me just tell you, just give a brief idea that what number is. Number is something which is used for measuring. See, if you have a coffee, right now you will be having a coffee you are preparing, right? Let me just correct you once. Now let's say we are having Bournvita right now. Right, so if you hold your mug, you see, you can measure some like how much Bournvita you are having in your cup right now. See, if you look at through scales, you can measure how much distance is there, how much the length of that anything you are measuring by scale. So everywhere we can see the uses of number. Number is a pivotal part of our life. Without number, you cannot imagine life, right? So I know you know what is number. You'll be very fluent with that. You are actually, I think you are better than me in knowing numbers, right? So just with that hope, let us know what is number line. So number line is nothing but if you represent a number on a scale, taking 0 at the center and positive on the right hand side, and if you see the negative on the left hand side, so this is called a number line, nothing but a scale. If you see a 15 mm scale, plastic scale you are having, right? Or wooden scale, just comment us, just tell us what you're having. So any wooden scale or plastic scale, that is a number line, nothing but a number line. Scale is a number line. Any type of scale, it can be a ribbon, it can be a plastic scale, it can be a wooden scale or steel scale. So that is a number line. And the difference is that in a scale you will find 0, 1, 2, 3, 4. You don't find the negative, right? You don't find the negative part. But in number line we have negative as well. That is -1, -2, -3. These all are there in a number line. So you can see the pictorial graph here given about the number line. This is called a number line. So after that we'll be knowing what are different types of numbers. Basically, if you see, before just going to the rational and irrational part, if you see a number, it is classified into two types. That is possible and that is not possible. Just two. You can call that is not possible as imaginary number, and that is possible, you can call that as a real number. So basically number systems can be classified or divided or grouped into two types. First of all, we can see it is imaginary number. Now see, if you see the term imaginary, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, राइट? If you see, like, I'll top the class. Oh, now I'm in class 9 or 10. If I go, when I'll go be giving my final exam, I'll top the board. That is your imagining thing. Imagining, that imagination. So such type of things are called imagination. So similarly in case of numbers also, if you imagine some number, that is called as imaginary number. That is not possible to represent on a number line. That is not possible, right? So if you see a number line, let's say this is a number line, this kind of number is not possible to represent on this number line. That is imaginary number. If you take the second case, that is real number. See, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर एक नेक्स्ट ईयर देंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देंगे, कभी देंगे, आपका इमेजिनेशन है कि टॉप करेंगे बोर्ड में, वो इमेजिनेशन है, अभी तक हुआ नहीं है। मगर आप जिस टाइम पे आप टॉप कर जाएंगे वो रियल थिंग हो गया, वो हकीकत में हो गया। तो जो नंबर दैट आर known by real time basis, that is called real numbers. That is possible to represent on number line. If you take the number line like 0, 1, 2 or 0.5, these all things are called real numbers. So अब you can have a doubt. आप डाउट पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस, समझेंगे कैसे रियल नंबर कौन से हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं? तो देखिए बॉस, कुछ नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कि कोई भी एक रियल नंबर, मान लीजिए 2, इसके सामने एक माइनस बैठा दिए और इसको रूट ओवर कर दिए, ठीक है? तो कोई भी रियल नंबर का नेगेटिव रियल नंबर का रूट लेंगे तो ये हो जाता है आपका इमेजिनरी नंबर। एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये आप नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -√2 कर सकते हैं क्या? सोच के देखिए, नहीं कर पाएंगे। तो यही है आपका इमेजिनरी नंबर। तो जो numbers, those numbers that cannot be represented on a number line are imaginary numbers, and those numbers that can be represented or is possible to represent on a number line, that is called real number. Just like the definition, imaginary and real. That's it. Easy. Let's move forward. Now see, let's say take some note. So square root of every negative number is an imaginary number, and if the number is not imaginary, it is real number. That what I've said. See, if we take a real number like 3, and if we put a negative of that is -3, and put a root sign, this is imaginary. It is imaginary. यही बात बोला गया है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, एंड इफ द नंबर इज नॉट इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी नहीं है, दो ही चीज हो सकता है। मैं भी बोला ना, नंबर सिस्टम में दो ही चीज हो सकता है, अगर इधर हो सकता है आपका इमेजिनरी या हो सकता है आपका रियल, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है। तो अगर ये इमेजिनरी नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा, ठीक है? अगर इमेजिनरी नहीं होता है तो ये रियल हो जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया गया व्हाई अ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी। अभी मैं बताया आपको, इट इज बिकॉज द नंबर डजंट बिलोंग टू एनी ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता है, और नंबर सिस्टम नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशंस। पहले देख लेते हैं, रियल नंबर्स में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। आप पूछेंगे, आप एक चीज बताते हैं, अगर जनरल टर्म में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर? व्हेन वी टॉक समथिंग सेंसिबल बात करते हैं, आप लोग तो दोस्त लोग में सेंसिबल बात होते ही रहते हैं। हम लोग पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, और अपने दोस्त लोग में आप लोग आज का रियल टाइम इश्यूज डिस्कस करते होंगे कि मोदी सरकार क्या कर रहे हैं, या कुछ कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब। तो ये सब हो गया रैशनल थिंकिंग या रैशनल टॉक्स, जो मेक सेंस, मतलब इजीली उसको हम लोग समझ सकते हैं, जो मतलब कोई सेंस बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल थिंकिंग या ओपन माइंडेडनेस। तो ये सब हो गया रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल थिंकिंग डेफिनेशन से। और अगर जो हम लोग कुछ बात करते हैं ऐसे कि कुछ भी बोल दिए, दो मजाक कर दिए, कुछ भी कर दिए, जो उतना यूजफुल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल थिंकिंग या इरेशनल टॉक्स। तो इसी तरीके से रियल नंबर का भी दो ही ऐसा पार्ट होता है, जैसे